C'était bien. C'était poussiéreux, très poussiéreux. Les Britanniques quittent leur colonie indienne en 1947, deux pays se forment, l'Inde et le Pakistan. Et la répartition des territoires entre les deux pays se fait selon un critère confessionnel. De façon automatique, les régions à majorité hindoue rejoignent l'Inde, celles qui sont à majorité musulmane rejoignent le Pakistan, que ce soit le Pakistan occidental ou bien le Pakistan oriental. Les États princiers, qui avaient le statut de protectorat sous l'Empire et qui avaient donc une certaine autonomie, ont eu le choix de rejoindre l'un ou l'autre pays. C'est le cas du Cachemire, avec cette particularité que la majorité de la population est musulmane, mais qu'elle est gouvernée par une dynastie hindoue. À l'époque, le Maharaja Hari Singh hésite. Plusieurs raids en provenance du Pakistan le poussent à demander le rattachement à l'Inde, et c'est comme ça que commence la première guerre indo-pakistanaise. En 1949, un cessez-le-feu est signé et de facto, le Cachemire est divisé en deux par une ligne de contrôle. Mais le Pakistan refuse de restituer certains territoires à l'Inde qui forment une province et de son côté, l'Inde n'organise pas, comme elle l'avait annoncé, un référendum d'autodétermination. En effet, la majorité des Cachemiris étant musulmans, elle craignait que le résultat ne lui soit pas favorable. Surtout qu'en 1962, l'Inde a perdu une autre province, l'Aksai Chin, et cette fois, c'est le voisin chinois qui a mis la main dessus. Dans ce contexte, une deuxième guerre éclate entre l'Inde et le Pakistan en 1965, et cette fois, le Pakistan en sort perdant. Les deux pays s'affrontent à nouveau 6 ans plus tard, mais cette fois dans la partie orientale du Pakistan. L'Inde soutient les sécessionnistes bengalis, et en 1972, les accords de Shimla reconnaissent un nouveau pays, le Bangladesh. A priori, rien à voir avec le Cachemire, sauf que dans ces accords, l'Inde et le Pakistan s'engagent à régler la question et le conflit du Cachemire de façon bilatérale, sans l'internationaliser. Loin de le résoudre, cette stratégie fait perdurer le conflit, avec des poussées de fièvre d'autant plus inquiétantes que depuis 1998, les deux pays sont dotés de l'arme atomique. How some people just too Babylonish. Where there's no vision, man, the people them perish. Almighty Father, grace where we cherish. People where we cherish, man, me get astonished. How some people just too Babylonish. Where there's no vision, man, the people them perish. Almighty Father, grace where we cherish. People where we cherish. Me yes said the man them a bow and the woman them a polish. Them kind of things sound too Babylonish. Selassie them remove and Monarchy them abolish. Them kind of things sound too Babylonish. Elton John a marry David Furnish. Them kind of things sound too Babylonish. Man them a bow and the woman them a polish. Them kind of things sound you follow them Babylonish shoes and them Babylonish socks. Babylonish shirt and them Babylonish hat. Babylonish pat and them Babylonish fat. Babylonish things we no want none of that. You follow them Babylonish bike and them Babylonish car. Babylonish plane and them Babylonish spar. If someone stops you there, I don't want to shoot you. Ouais, j'ai compris. Okay, start. So, where are you ready? Where are you ready? Where are you? Thank you. But Indian roads are very good. Okay? You might have. But that is too dangerous.
C'est important. Nous avons choisi de traverser le Cachemire en toute connaissance de cause. Le Cachemire n'est pas une zone interdite, c'est une zone particulière, délicate par rapport à sa situation géopolitique. Il y a 700 000 hommes qui sont là pour contrôler et bien évidemment notre équipage de 2 motos en couple n'est pas passé inaperçu car il y a assez peu de touristes et quand bien même quand il y en a, ce sont plutôt des Indiens. Le Cachemire étant la zone la plus militarisée au monde, nous avions anticipé le fait de pouvoir être arrêtés et nous avions bien sûr fait attention à ne pas avoir sur nous quelque chose qui soit interdit. Il faut comprendre que le tourisme est en voie de développement au Cachemire, une politique dans ce sens. Ce n'est pas encore l'endroit où vous verrez beaucoup de touristes occidentaux, bien évidemment. जीना अब मुश्किल नहीं तेरे बिना तेरी हर मुस्कान मेरी जिंदगी की रोशनी तू मेरी हर ख्वाहिश तू मेरी हर कहानी तेरे संग जिंदगी बन जाए तेरे संग ख्वाबों को मिल जाए तेरे संग जिंदगी बन जाए तेरे संग ख्वाबों जाए तेरे संग दिल को चुराने लगी तेरी तेरे संग दुनिया भुलाने लगी तेरे संग दुनिया भुलाने लगी तेरे संग तानी हर लम्हा मुझे तेरी हर बात पे दिल को समझाना है तेरी आंखों में खोना मैं चाहता हूँ तेरे बिना जीना मैं नहीं चाहता हूँ तेरे संग ख्वाबों को मिल जाए तेरे संग जिंदगी बन जाए तेरे संग ख्वाबों को मिल जाए तेरे संग दिल को चुराने लगी तेरे संग दुनिया भुलाने लगी तेरे संग जिंदगी बन जाए तेरे संग You want to stay here or you want to go to How many days you will stay? one night? One night. Okay. But if you have AC room? Yeah, I have AC room, food, everything. All right. Finalement, n'ayant pas pu faire affaire sur le prix, nous sommes allés dans notre établissement au bord du lac et celui-ci était parfait. सूरज ढलने लगा है शाम होने को है सूरज ढलने लगा है आसमान पे रंग बादले जैसे कोई सपना है आसमान पे रंग बदले जैसे कोई सपना हवा में खुशबू गुल सी तेरी याद आ गई इस दिल में जैसे पूरी दुनिया है Alors, Alors, il fait déjà chaud. Mais bon, pour l'instant, pas plus chaud que chez nous. c'est une journée off aujourd'hui à Srinagar.
On est parti déjà depuis 4 jours, on a passé de longs moments dans les aéroports, arrivé à Catra, louer les motos, passer une longue journée avec, entre autres, cet arrêt avec la police. Aujourd'hui, on a besoin de se poser un petit peu et de faire quelques petites réparations sur la moto d'Olivier. La béquille est cassée, la roue arrière semble voilée, la direction n'a pas l'air vraiment au mieux de sa forme. On va passer chez un garagiste pour essayer de faire le point sur tout ça, car après le Ladakh, à l'arrivée au Ladakh, on va devoir monter, on va avoir besoin de force et on va besoin également d'avoir des motos sûres pour faire la dernière ligne droite. दूसरी चाल होती ठीक नॉर्मल वाला थोड़ा टेस्ट आएगी Nice. Okay, Jimmy. My name is Jimmy, designer. My name is Valerie and is Oliver. Oh yeah, you too. Nice to meet you. सूरज ढलने लगा है शाम होने को है सूरज ढलने लगा है आसमान पे रंग बादले जैसे कोई सपना है आसमान पे रंग बदले जैसे कोई सपना हवा में खुशबू गुल सी तेरी याद आ गई इस दिल में जैसे पूरी दुनिया है मेरी इस पल में जैसी पूरी दुनिया है मेरी सांझ सुनहरी तेरे संग गुजारनी है सांझ सुहानी तेरे संग गुजारनी है बातों में प्यार नजरों में प्यार है बातों में प्यार नजरों में प्यार है हर लम्हा तेरे बिना अधूरा सा लगता है
जैसे जान से जुदा है, तुझसे जान से जुदा। सपनों में तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखा करता हूँ। तेरे बिना हर जगह सुनसान सा लगता है, तेरे बिना हर जगह सुनसान सा लगता है। दिन भर तेरे इंतजार में गुजरता है। शाम होते ही तुझसे मिलने की तमन्ना होती है। शाम होते ही तुझसे मिलने की तमन्ना होती है। सांझ सुबह Il est immense. Bon, là, je crois qu'on est bien détendu. Et heureusement, car à partir de demain, les choses sérieuses ont commencé.